10 लक्षण पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन्होंने भी व्रत किए हैं, उपवास किए हैं, उनको भगवान बहुत शक्ति दे और साता में रखे उनको। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और जब तक कार्यक्रम का ओवरव्यू देती हूँ। और जो लोग पार्टिसिपेंट हैं, मैं सिर्फ उनका इंतजार कर रही हूँ कि उनकी प्रेजेंटेशन है तो वो मिस ना हो। आज जैसा कि सभी जानते हैं कि आज मार्दव धर्म है। हमारा ये कार्यक्रम मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम मार्दव धर्म के ही ऊपर बेस्ड है। बच्चों ने इसमें प्ले, पोयम, जो भी उन्होंने क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की है। ओवरव्यू ऑफ टुडेज प्रोग्राम। शिशु संस्कार, जो कि हमारे नन्हे श्रावक श्राविकाएं वियाना एंड वान्या प्रेजेंट कर रही हैं। डांस फ्रॉम सुरभि, प्ले फ्रॉम अवनी निष्का मानित, पोयम फ्रॉम ईश एंड इवान जो कि लाइव प्रेजेंट करने वाले हैं। उसके बाद आरुष वो भी लाइव अपनी स्टोरी बोलने वाले हैं। फिर निष्का एंड अवनी का डांस है जो कि मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। फिर मानित की मार्दव धर्म के ऊपर उसकी रिसर्च है। देन परम भजन प्रस्तुत का ऑलरेडी मेरे पास उनका वीडियो है। एंड स्मृति एंड सम्यक मार्दव धर्म के पर आधारित एक प्ले करने वाले हैं। देन निष्का एंड अवनी की पोयम है जो कि इंग्लिश में है, बट उन्होंने मार्दव धर्म को किस तरह से आप देखेंगे जब वो उस पोयम सुनाएंगे कि उसका सारांश निकाल के उन्होंने इंग्लिश में उस पोयम को लिखने की कोशिश की है, जो कि रिटन बाय निष्का है और अवनी के द्वारा पब्लिश की गई है। और अंत में मुझे मालूम है कि ये बच्चों का प्रोग्राम है, बट हम मॉम्स नहीं रह सके डांस किए बिना, तो इसमें कुछ मम्मियों, डीजेसन की कुछ मम्मियों का लास्ट में डांस है। जो भी पार्टिसिपेंट है, कोई मिस आ रहा है, कोई रहा तो नहीं है ना? सभी प्रेजेंट। शिवांगी, ईवा का नाम मिसिंग है। सॉरी, क्योंकि ये स्लाइड पहले बन गई थी तो मैं पहले ईवा और मुझे एक और नाम आया है आरजव का, तो उनकी भी प्रेजेंट आरव का। हाँ, ठीक है। सबसे पहले एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ ही समय के लिए रोएगा, मगर बच्चों को संस्कार ना दिए जाएं तो वो जिंदगी भर रोएंगे। तो हम विदेशों में रहते हुए हमारी यही कोशिश है कि हम अपने बच्चों को कैसे जैन संस्कार देते रहें। तो इसी कड़ी में प्रेजेंट करना चाहती हूँ हमारी नन्ही श्राविकाएं वियाना एंड वान्या। ये आपका पहला 10 लक्षण धर्म है। पता है इसका नाम 10 लक्षण धर्म है, मतलब हम इसमें 10 धर्म का पालन करते हैं और जो इन 10 धर्मों को अच्छे से पालन करता है नियम के साथ, उसे मोक्ष प्राप्ति होती है। सभी को आवाज तो आ रही थी वीडियो की? आ रही थी। यदि कुछ टेक्निकल ग्लिच होता है तो प्लीज बोल दीजिएगा, स्पीक आउट।
सिताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं। याना, ये आपका पहला 10 लक्षण धर्म है। पता है इसका नाम 10 लक्षण धर्म है, मतलब हम इसमें 10 धर्म का पालन करते हैं और जो इन 10 धर्मों को अच्छे से पालन करता है नियम के साथ, उसे मोक्ष प्राप्ति होती है। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम इन धर्मों का पालन करेंगे 10 दिन, है ना, और हम अच्छे जैनी बनेंगे। जय जिनेंद्र। तो ये हमारी कड़ी थी कि किस तरह से हम जैन संस्कार दें। तो इसमें मैं नेहा जैन, अभिनव जी, जिनकी नायशा, याना एंड आंशी, वो किस तरह से लाइव प्रेजेंट करना चाहते हैं, किस तरह से वो जैन संस्कार दे रहे हैं तीनों बच्चियों को। स्टॉप शेयरिंग। नेहा, आर यू प्रेजेंट हियर? Yeah, I'm here. Naisha, big sister, what are you going to say to your little sisters? I don't know. Okay. Namo Are you going to teach Tanamo and Tanam? To babies? Namokar mantra to babies? Okay. Okay. Namo. Mantam. Namo Santanam. Namo Iriyanam. Namo Uvachayanam. Namo Loe Sauvasahunam. जय जिने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है सुरभि अश्विनी जी की डॉटर। आज वो प्रेजेंट है क्या? वो लाइव डांस प्रेजेंट करने वाली है। वो आ गई है क्या? हाँ जी, हाँ जी, 1 सेकेंड। हाँ, तो अभी सभी म्यूट हो जाएंगे, तो वो कुछ शेयर नहीं करने वाले हैं, सो पिंग कर सकते हैं सभी लोग उनके डांस को देखने के लिए। I'm fast. मिडिल में करेंगे क्या उसको? सेंटर में करोगे स्क्रीन से, सुरभि अच्छे से दिख पाएगी। क्या बोल रहे हैं? सुरभि दिख नहीं रही है अच्छे से, थोड़ा सा कैमरा मूव करोगे क्या, तो जिससे वो प्रॉपर दिख पाएगी। थोड़ा टिल्ट करोगे या मूव करोगे कैमरा, तो फोकस उस पे रहेगा। तो हाँ, आप लोग सभी लोग और उस देख पा रहे हैं क्या सुरभि को? मैं नहीं देख पा रही बहुत अच्छे से। नहीं दिख रही है ऐसे, थोड़ा सा लाइट कम है जी। ओके, नहीं बराबर है। दिखाई दे रही है। She's all right. So it's all right. Okay, दिख रहा है अच्छे से। करिए। 1, 2 स्टार्ट। सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन पाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन पाती दीपक जलता है। आइए शुभ घड़ियों
वेल डन सुरभि, डिटेल्स के बच्चे एक से बढ़ के एक टैलेंटेड है। थोड़ा सा लाइट कम था जी। नहीं Sorry. बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हमें Well, बच्चों से सीखने को मिलता है, एक से एक टैलेंट है हमारे बच्चों में। जब लाइव प्रोग्राम करेंगे तो इसको करना है। हाँ जी, thank you जी। ब्यूटीफुल डांस। हाँ, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम नेक्स्ट कार्यक्रम दिखाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कार्यक्रम है, एक ये जो प्ले है अपनी निष्का और मानिक के द्वारा रचित है। इन्होंने उत्तम माधव धर्म पर आधारित हम किस तरह से अपनी डेली लाइफ में उत्तम माधव धर्म को इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये प्ले इंग्लिश में है, तो मैं इसका थोड़ा सा आधार बताती हूँ कि ये प्ले बच्चों के टीचर और स्टूडेंट के बीच का कॉन्वर्सेशन है। और इसमें 3 कैरेक्टर है, निष्का एज एमी, अवनी एज स्कारलेट एंड मिस्टर मिचेल एज मानिक। ये बच्चे, क्योंकि हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो इन्होंने नाम और ये सब कुछ रेफरेंस इन्होंने अपने चारों तरफ जो माहौल है उस हिसाब से माधव धर्म को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे उस पर आधारित है। देखिए। I'm telling you, Scarlett, I'm so gonna beat you in this competition. Oh, Amy, we all know I'm a better at drawing. They think scribbles are even drawings. You'll see, I'm gonna win. I can't see your screen. Okay, everyone, it's time to show your drawing. किसी को दिख पा रहा है प्ले? स्क्रीन नहीं दिख पा रही क्या? नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रहा। एक मिनट। बिगनिंग से लगाते हैं। I'm telling you, Scarlett, I'm so gonna beat you in this competition. Oh, Amy, we all know I'm a better at drawing. They think scribbles are even drawings. You'll see, I'm gonna win. As if. Okay, everyone, it's time to show your drawings. And the winner is Scarlett. Yes, thank you, thank you, thank you. Yay! I can't believe Scarlett wants this drawing so bad. Amy, Scarlett into my office. I know you like competing against each other, but don't make it this extreme. It's not good to have too much ego, okay? Okay, Good, now you two can go. I'm sorry, Scarlett, for acting that way. I'm sorry as well, Amy, for being an egoist. Apology accepted? Apology accepted. ये हमारा जो प्ले था, बच्चों ने माधव धर्म के ऊपर उन्होंने अर्थ समझकर नैरेटिंग, डायरेक्ट एक्टिंग सभी कुछ इन बच्चों ही के द्वारा था। वेरी नाइस। नेक्स्ट मैं ईस एंड इवान को इनवाइट करना चाहती हूँ, जो कि अपनी कविता हिंदी में पेश करना चाहते हैं। ईश एंड इवान,
मैं यहाँ से लाइव करना बंद करती हूँ और सभी लोग म्यूट हो जाएं। Jaijiland. I'm just counting up to 10 in Jainism. बोले मिलकर हम सब एक प्रभु चरणों में माता थे. बोले मिलकर हम सब दो चिन्हवाले जय जय हो. बोले मिलकर हम सब तीन वर्ण में साधु. बोले मिलकर हम सब चार उत्तम संयम सत्य विचार. बोले मिलकर हम सब पांच पापों की न आशा. बोले मिलकर हम सब श्रवण कलम है जय. बोले मिलकर हम सब सात वचनों की न आशा. बोले मिलकर हम सब आठ मूल गुणों का पल्लो पाठ. बोले मिलकर हम सब नौ देवों की सदा नमो. बोले मिलकर हम सब दस धर्मों की जय जय हो. जय जिनेंद्र. वेल डन ईशवान. Beautiful, Ishivan. बहुत प्यारा बेटा. 10 पोएम पूरा बता दिया आपने. 10 काउंट पूरे 10 हर एक का मीनिंग बता दिया. वेरी नाइस. Excellent, Ishivan. उसके नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारे थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो रहा है, उसके लिए मैं उत्तम क्षमा मांगती हूँ. हाँ, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है आरुष, जो कि मार्दव धर्म पर आधारित एक स्टोरी बोलना चाहते हैं. मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि आरुष है क्या? हाँ. हाँ. Jaijineendra. Oh, I'll start soon. Wait. Share kar. Can you let me screen share? Can it? Yeah, I You can. can share the screen, yeah. Yeah, बेटा, we can see. Jaijineendra, everyone. Today I am going to tell you a story about Uttam Mardav Dharma, means supreme honesty dharma. It helps us to stop our ego instead of getting man kashai. Once there was a powerful king in the ancient Greek kingdom, and his name was Alexander the Great. He was a great emperor and became king of Greece at the age of 20. He wanted to conquer the whole world. He fought so many wars and battles and kept becoming more and more powerful by winning over countries like Afghanistan, Iran, Turkestan, and many more. After that, he came to India to conquer and rule over it. At that time, India used to be a very rich country. India was known as the Golden Bird. Alexander had heard that in India there were many spirituals and enlightened saints. One day he went to the bank of Indus River, and there he saw a saint. He was very surprised to see the peaceful expression and renunciation of the saint. Alexander requested him to accompany him to his country Greece and start living with him in his palace. Alexander offered all the kingdom, wealth, and precious stones to him. But the saint said, "I have left all this. I do not need any wealth and money in my life.
I have already discarded all these things and became a saint. Alexander became very angry after hearing this. He was very annoyed and felt insulted that someone could refuse him, who was such a big emperor. He drew his sword to kill the saint, but the saint was very still and calm. The monk said with a smile, "Like you will see my body being cut with this sword, in the same way I will also be seeing myself be cut." Alexander did not understand this. He got confused and looked towards the saint. So the saint explained, "You can punish my body only, not my soul. My soul can never die. It is immortal. My soul is never going to disappear, not going to die. And how can anyone kill someone who cannot die?" Alexander shivered after hearing this. His sword fell and he apologized for his arrogance. It was said that Alexander was the most powerful commander in history who was undefeatable. During his last days, Alexander became very ill. He wanted to meet his mother before dying and requested the doctor that they should save him till his mother arrives. And he said, "Take anything from me, but give me a few days of life so that I can meet my mother." But the doctor said, "We cannot save you. No one can save you." Alexander felt all my wealth, all my money that I've earned in my whole life and becomes so powerful that my money cannot even give me a life for a few days. He learned a big lesson and told everyone in his kingdom that when I die and you are carrying my dead body, the whole world should see my empty hands. Everyone should know that I am Alexander who had conquered and the whole world and collected immense wealth. Finally, after dying, going with empty hands and could not take even a grain of his wealth. The story teaches us that in our life, we should not have ego. We must practice Uttam Mardav Dharma, because only our good and bad karmas accompany us in our next life, nothing else. Uttam Mardav Dharma ki jai ho. वेल डन आरुष, वेल डन, बहुत अच्छा आपने बताया हमें। जो आत्मा के माधव स्वभाव को जानते हैं पर द्रव पर पदार्थों का मान करते हैं और जो पदार्थों को मान करते हैं वो अपनी आत्मा के स्वभाव को नहीं जानते हैं। वेल डन एक्सप्लेनेशन, वेल एक्सप्लेनेशन ऑफ माधव। Is there anything left, Mardav? हाँ, इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए इसमें मैंने सभी कुछ कॉम्बिनेशन में है, प्रेजेंटेशन और डांस। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अगेन मेरी बेटी है। वो मुझे मालूम था कि मम्मी हमारी फैमिली कर रही है, तो उसके बहुत सारे प्रोग्राम है। सॉरी, उत्तम क्षमा यदि किसी को बुरा लगे तो, बट वो प्रेजेंट करना चाहती है। उसका एक और प्रोग्राम है, उसका डांस है अवनी और निष्का का, तो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। डायरेक्टली करते हैं प्ले। स्क्रीन दिख पा रही है सभी को? हाँ, दिख रही है।
सारी गलतियां भूल जावे केसरिया 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 सब छोड़ के धर्म की बात करें आया कर्म प्रयोजन सब छोड़ के तत्व और त्याग करें संतों की वाणी से सीखेंगे सारे जीवन का प्रयोजन आया है कर्म और तुम का प्रयोजन आया है कर दूर देश तुम मन का कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं स्टॉप शेयरिंग। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है मानित जैन, जो कि मारदव धर्म के आधारित एक प्रेजेंटेशन तैयार की है। सो मानित, अच्छा डांस। Can you see it? Yes, we can see it. Okay. Uttam Madhav. What does Uttam Madhav mean? Uttam Madhav means not having any ego, instead being respectful and humble. What does Uttam Madhav teach us? Uttam Madhav teaches us that we should put an end to vanity and egoism. Story of Uttam Madhav. One day there was a king named Alexander the Great. He conquered many countries and became powerful each time. One day, the king decided to go to India. In India, one day, he found a sadhu sitting peacefully. The king was baffled. How could a sadhu be sitting there so peacefully, even if he was going to attack the country? Alexander the Great offered the sadhu wealth, the kingdom, and the precious stones, but the sadhu has said that he has left all these things to become a saint. The king got very mad. Someone was insulting the king. Because of the king's madness, he raised his sword above the saint's head. As he was about to kill the sadhu said, "Just like you are going to see me killed, I will see myself getting killed." The king was confused. So the sadhu explained, "You are killing my body, not my soul, and my soul is the living being. So how are you expected to kill me even if you can't see my soul?" The king understood. "Sorry," he replied, and left India and went back to Greece. What did we learn from this story? We learned that people shouldn't have too much ego. The end. Thank you. Right here. Very nice presentation. वेल डन मानित, वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके बाद नेहा, ईवा रेडी है क्या? Yes, she is. Just make me co-host so that I can share the screen. Okay. Can you see the screen? Can you see the screen? Yes, we can see. Yeah, Janine, today I'll be telling you about Uttam Madhav. External view. Wealth, good looks, reputation of a family, or intelligence often lead to pride.
Pride means to believe one to be superior to others and to look down on others. By being proud, you are measuring your worth by temporary material objects. These objects will either leave you or will be forced to leave them when you die. Being humble will prevent this. Reducing this desire and being content with what we have leads to satisfaction internally. Contentment or happiness derived from material objects is only perceived to be served by a soul in state of false belief. The fact is that material objects do not have a quality of happiness, and therefore happiness cannot be obtained from them. The perception of enjoying material objects is only a temporary perception. This perception rewards the soul with only misery and nothing else. Real happiness comes from within, as it is the soul that possesses the quality of happiness. Now I'm going to tell you a fun story as an example. As you all may know, there once was someone who lived under the pineapple under the water. SpongeBob SquarePants. SpongeBob was a successful and happy sponge. He was wealthy and had everything he desired. He also had his childhood best friend, Patrick. He was poor but supported him through everything. SpongeBob and Patrick would have always encouraged each other and encouraged each other to go further. But one time, SpongeBob went too far. A couple of years ago, SpongeBob lost his job and was bankrupt. He was about to become poorer than Patrick. However, Patrick was a good friend and gave all his savings to SpongeBob to him to start a new business or simply to survive. Years later, some money that Patrick had given SpongeBob to use in a new business became very successful, and SpongeBob became the richest person underwater. However, pride swallowed him. He became so overpowered that he was embarrassed to be friends with Patrick, someone poor. He said that Patrick was only friends with him because of his wealth. SpongeBob was so filled with himself that he thought there was no use in working hard anymore. He already had it all. This pride led him to failure. Slowly, his business started to go down and he became bankrupt again. At this same time, Patrick's farm, as he was a farmer, was flourishing. He had started to get a lot of sales and money. He became rich. He saw SpongeBob's fail, but being a good person he was, Patrick helped SpongeBob and gave him a job. The moral of the story is we should always be nice and help others when they need it, and do not get pride and become rude. Well done, Eva. And then Uttam Shama. Yeah. Good, Eva. Because I watch SpongeBob, so I loved it actually. Yeah. Great. Very nice. Great story. तो अभी हमारा सबका कोशिश करना है कि अब हम अपने अहंकार और ईगो को कम करने की कोशिश करें. वहीं से ही सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं. सो कोशिश करेंगे. शिक्षक सिर्फ वही नहीं, बड़े ही नहीं होते, ये बच्चे भी हमारे शिक्षक बन सकते हैं, जो सिर्फ हमें क्लास में पढ़ाते नहीं. हर जगह से जहां से भी ज्ञान मिले हमें ले लेना चाहिए, इन बच्चों से भी लेना चाहिए. ओके, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने हमारे डीजेएसएम की गुरु टीचर, उनके डॉटर एंड सन स्मृति एंड सम्यक पल्लवी जी हैं यहाँ पर. क्या वो एक माधव धर्म पर आधारित एक प्ले प्रेजेंट करने वाले हैं. सो सम्यक एंड स्मृति, आर यू हियर? Hello, yes, we are. We're just singing a bhajan. Jai Jinendra. These auspicious 10 days of Dashrakshan Parva offer us an opportunity to focus on the qualities and essence of the soul. May we all see Bhagwan in ourselves and every other jeev that we know. The Dash Dharmas work like antiviral vaccines to protect against the most deadly virus of Mithyatva, which causes Moha, Rag, Dvesh. मार्दव का एंटीवायरस हमें अभिमान नाम के वायरस से बचाता है. और अभी हम स्तुति बोलेंगे. दशलक्षण ध्रुव धर्म की महिमा कहूँ महान,
पार करू सोपान दश पाऊ पद निरवान राग श्री जिनेन्द्र ज्ञान रूप मंगलम गणधरादि सर्व साधु ध्यान रूप मंगलम वस्तु का स्वभाव ही अनाद्यनंत मंगलम चैन धर्म विश्व धर्म सर्व धर्म मंगलम उत्तम क्षमा माधवार्ज मंगलम शौच सत्य संयम तप त्याग श्रेष्ठ मंगलम धर्म आकिंचन्य ब्रह्मचर्य मंगलम धर्म दश धारणीय सर्वश्रेष्ठ मंगलम मुक्ति सोपान दश यही भव्य मंगलम भावमयी नव विधान परम दिव्य मंगलम। जय जिनेन्द्र। वेल डन बच्चों, वेल डन। बहुत ही अच्छी कविता भजन था आपका, प्यारा बच्चों, बहुत प्यारा। मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारे परम जैन, परम शाह, सॉरी मैं नाम में मिस्टेक कर दी हूँ तो उसका वो हमारे सामने भगवान महावीर के संदेश को लेकर आ रहे हैं नन्हे श्रावक परम जो शाह, सॉरी जैन मेरे मुंह पे क्योंकि मेरा नाम जैन है तो मैं नाम में गड़बड़ कर देती हूँ, उत्तम क्षमा। इनका ऑलरेडी हमारे पास वीडियो है भजन का। सॉरी ये ऊपर वाला आ गया, इससे पहले वाला। मैं परम शाह 10 लक्षण पर्व पर तुमको भजन सुनाने जा रहा हूँ। सब पापों को अब धोने का ये वक्त निराला आया है। ये दिन जो है बड़ी पावन है, सब धर्म में सार समाया है। नव कार्य ही जैनत्व यही महावीर की वाणी यही जग में उस वाणी को साकार करे यह भूषण आया है। अब सबको हम माफ करें, सब हमको भी माफ करें, इतनी सी है दिल की आरती। हम सबकी अब हो जाए सब अपनी, अब हो जाए इतनी सी है दिल की आरती। बिना पाप किए उन पापों को अब नष्ट करे, कुछ कर्म करे जो अपनी गति भी अच्छी हो, कुछ ऐसे अपने कर्म करे। कई जन्मों की जब पुण्य मिले तो मानव का यह जन्म मिला, यह धर्म मिला महापर्व मिला, अब तो खुद का उद्धार करे।
Well done, Param Saab. Very nice. Nice, Param. स्टॉप शेयरिंग नेक्स्ट स्वाति का मुझे फोन आया था कि आज वो आरब कुछ प्रेजेंट करना चाहता है, तो स्वाति आर यू देयर? हाँ, कुछ बोल रहा है वो कार्मन सुनाना चाहता है। स्वाति आप म्यूट पर हैं। नहीं, वो ट्राई करिए बच्चे को पहले। नमोकार मंत्र नहीं से नमो नमो अरि धारम नमो से धारम नमो हरियारम नमो बुझारम नमो लोय सब साहुरम एस फटू उकारम नमो बाबा बेदातरम अंकला शुसबिसम हरमो जय जिनेम जय जिनेम जय जिनेम। Well done, Arav. Well done. इसके बाद हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अवनी एंड निष्का। निष्का है उसमें, अवनी एंड निष्का। निष्का आर यू पीयू, तुम वहां पर हो? Yes. हाँ, तो पोयम बोलने वाले हो अवनी एंड निष्का। Avni, can you share the screen? Okay. हाँ, तो इसके बारे में बोलना चाहती हूँ। रिटन बाय निष्का एंड पब्लिश्ड बाय अवनी। हेलो। हाँ, This might take a while. नहीं प्रेजेंट कर रहे, ठीक है ठीक है, ओके कोई बात नहीं। इसके बाद अंत में हमारे कुछ मम्मियों ने भी बच्चों का पार्टिसिपेशन था, बट फॉर एडिशन हम लोगों ने भी एक डांस है, तो मैं डांस शेयर कर देती हूँ। बेटा 2 मिनट लगेगा कि हो जाए? हाँ, हो जाएगा। शिवांगी जी, अपना एक्चुअली ना 7:30 तक का ही टाइम था, फिर अपना अभी प्रतिक्रमण का भी टाइम है। ठीक है चला गया अभी। तो सिर्फ अपनी का ही पोयम हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर होगा तो हमारा भैया जी का प्रवचन फिर चालू हो जाएगा एक्चुअली, तो भक्ति भी नहीं कर पाएगी। बच्चों की पोयम कर ले क्या? बच्चों की पोयम अगर छोटी से तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब दूसरे दिन भी है, अगर वो पोयम अगर मार्दव धर्म के रिलेटेड नहीं है ना, तो हम मैंने बोला था बच्चों से यही बोला था कि मार्दव धर्म से नहीं है, बट नहीं, ऐसा नहीं है तो कोई भी दिन कर सकते हैं, तो दूसरे दिन अपन शिफ्ट कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम नहीं है तो। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम बच्चों से पूछ लीजिए आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। हाँ निष्का, अभी करना है क्या बेटा, या दूसरे दिन कर सकते हो क्या आप? रिक्वेस्ट है, मतलब आज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। It is about Mardav Dharm, so it would make more sense if we do it today. Okay, then do it. Okay, good. Go ahead. जब तक वो ढूंढ रही है, मैं बच्चों मेरा एक डांस लगा दे रही हूँ 2 मिनट का। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। Okay, I'm ready. Nishka? Uttam Mardav tells us that we shouldn't be full of ourselves. How bad it is to have too much ego. This happens to all of us, starting from the word go. Well, this happened to one person. His name was Alexander the Great. He was planning to conquer the world with the help of his mates. He started at small countries, defeating many kings. Then he arrived at the country which golden birds flew upon, to rule and take extraordinary things. The man had many stories, spiritual sayings, so he planned to offer him to his palace and covering the principal. When he told this to one saint,
that he could live in a palace and have ultimate gold? The saint replied with a no, which made the king very mad. No one has ever been so bold. In the last day of his life, he requested that he could live for any longer, so I can see my mother. The doctor replied by saying, "Sorry, but I can't." Then he requested that his hands be shown empty during the funeral. After all his gaining, all his golden power, my hands are still empty. I should have been more like the lotus flower. ओके बच्चों, डन, फिनिश, वेल डन. चलो, यस, उत्तम, क्षमा. बहुत अच्छे बच्चे. आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आयान जी और सपना जी से बोलती हूँ कि हम अपनी भक्ति करते हैं. सॉरी फॉर लेट हो गया, ज्यादा समय लेने के लिए. सभी को जय जिनेंद्र. अपन नमोकार ले लेते हैं, उसके बाद अपन लघु प्रतिक्रमण कर लेते हैं. ठीक है. नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयेरि